एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है, स्पेशली फ्रॉम द साउथ एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग लाइक पाकिस्तान, इंडिया, के फीस कितनी है। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ुहा खालिद एंड आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए वो उन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए है जो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजे हैं। सो जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड, तकरीबन 2.5 साल पहले मैंने एक वीडियो कोलैबोरेशन की थी कुतैबा महमूद के साथ, जिसमें मैंने बेसिक्स बताई थी कि स्टडिंग इन कनाडा, लाइक हाउ टू गेट अ स्टडी परमिट, वीज़ा, उसकी बिल्कुल बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी और जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। बहुत लोगों ने उसको पसंद किया कि बहुत इन्फॉर्मेटिव वो वीडियो थी। लेकिन उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करना शुरू कर दिए कि यू नो विद देयर रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस लाइक व्हाट दे वांटेड टू नो मोर अबाउट फॉर स्टडी इन कनाडा। और अभी पिछले हफ्ते ही वो मैसेजेस की तादाद 1000 से ज़्यादा एक्सीड कर गई है, जब फिर मैंने डिसाइड किया कि ओके आई हैव टू मेक सम वीडियो एंड आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस मैं आज आपके सामने आंसर करने वाली हूँ वो भी एक बिल्कुल लाइक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। और उसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन आपके जहन में हो तो यू आर वेलकम टू लाइक कमेंट इन दिस वीडियो एंड आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो टू आंसर दोस कंसर्न्स एंड क्वेश्चंस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा हुआ था वो था कि जब हम कनाडा में पढ़ने के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या हमें कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए और या फिर यूनिवर्सिटी में। तो जस्ट टू गिव यू अ लिटिल डिफरेंस लाइक हाउ टू इंस्टीट्यूट्स आर लाइक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बेसिक डिफरेंस ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको प्रोफेशनल डिग्रीज़ और ज़्यादातर एकेडमिक डिग्रीज़ यानी प्रोवाइड करती हैं, इंक्लूडिंग बैचलर्स, मास्टर्स, PhD और पोस्ट ग्रेजुएट। बट कॉलेजेस में आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, यू नो हैविंग सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमाज एंड अदर डिग्रीज। Another major difference is that colleges की जो पढ़ाई है वो career based education पे focus करती है और ज़्यादा hands on training होती है। So for example if you want to study graphic design तो वहाँ पर आपको बहुत opportunities मिलेंगी उस skill को सीखने की और उसको practice करने की। Compared to universities वहाँ पर थोड़ा मामला मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ पर फोकस की जा रहा होता है थेरी पे, बैकग्राउंड पे, हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ में आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। डिपेंडिंग ऑन विच प्रोग्राम यू आर गोना गो टू, हर यूनिवर्सिटीज़ की अपनी डिफरेंट ऑफरिंग्स होती हैं। तो आप जिस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं आप देखेंगे वेदर उसका जो करिकुलम है वो बेहतर यूनिवर्सिटी में आपको मिल रहा है या कॉलेज में मिल रहा है और उस हिसाब से फिर आप सेलेक्ट कीजिए। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इतना यानी स्पेशली फ्रॉम द साउथ एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, लाइक यू नो यहाँ से अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करता है तो सबसे बड़ा एक कंसर्न होता है कि फ़ीस कितनी है, फाइनेंशियल कितने आपको चाहिए होंगे यहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि द डिफरेंस ऑफ लाइक यू नो द डिफरेंस ऑफ एक्सपेंसेस और कॉस्ट फ्रॉम योर कंट्री, I'm specifically talking about the countries in South Asia, बहुत ज़्यादा हो जाता है जब आप कनाडा में आते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, वो इस वजह से क्योंकि स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं, तादाद उनकी कम है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, बट ऑब्वियसली यू नो देयर आर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। समटाइम्स कुछ कंट्रीज़ के या यूनिवर्सिटीज़ के यू नो डिफरेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी हो रहे होते हैं यू नो डिफरेंट कंट्रीज से कि आपके कंट्री के स्टूडेंट हमारी कंट्री में आके पढ़ें तो हम उनको स्कॉलरशिप यू नो प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी अगेन स्पेसिफिक टू योर इंस्टीट्यूट वेयर यू आर अप्लाइंग टू। हाउएवर देयर इज़ वन थिंग दैट यू शुड बी कॉशियस ऑफ। जब आप स्टडीज़ के लिए प्लान करें कनाडा के लिए तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यू नो दे वांट टू वर्क आफ्टर दे यू नो फिनिश देयर स्टडीज़ ओवर हियर, और प्लान लॉन्ग टर्म यही होता है कि आप यहाँ पर सेटल हों। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एक आपको मिलता है आपकी पढ़ाई के बाद यहाँ पर। तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर आप
किसी फंडेड प्रोग्राम में आ रहे हैं या आपको कोई गवर्नमेंट ऑफ कनाडा या ग्लोबल अफेयर्स कनाडा से एसोसिएटेड प्रोग्राम से आपको स्कॉलरशिप या फंडिंग मिल रही है, तो आप उस वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो जब भी आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें या फिर किसी फंडेड अपॉर्चुनिटी के अप्लाई करें, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि ये आपको आगे जाके मुश्किल तो नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट, एज आई सेड बिफोर, want to work and then later settle in Canada। तो उस हिसाब से आपको आंखें खुली रखनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या हैं स्टडी परमिट की, because you don't want to end up having surprise at the end of the duration of your study, क्योंकि फिर उस वक्त बहुत ज़्यादा यानी आपको obviously tension शुरू हो जाएगी। At the same time, if it's not a postgraduate work permit, if you're applying for an open work permit, उसकी requirements different होंगी। So maybe if you're getting a scholarship over there, you would be eligible for the work permit. But again, whatever opportunity you're saying yes to, keep in mind to read everything that it has to offer and then make your decision. फिर कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल भी पूछा है बहुत ज़्यादा कि दे गिव मी अ नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और कॉलेज यूनिवर्सिटी और पूछते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इस प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो आई एम बेसिकली अ सोशल साइंस ग्रेजुएट। मेरी सारी जो हिस्टोरिकल मेरी पढ़ाई है या मेरा जो करियर एंड प्रोफेशन सब कुछ है वो बेसिकली सोशल साइंसेज है, जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें डिफरेंट होती हैं कंपेयर टू लाइक नेचुरल साइंसेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंसेज, लाइक ऑल अदर डिफरेंट फील्ड्स। तो मेरी नॉलेज या एक्सपीरियंस इतना एक्यूरेट नहीं होगा आपको बताने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो जब भी आपको किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम या स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन चाहिए, सो गो टू देयर वेबसाइट प्लीज़। Every single information that you need to study in Canada or to get admission in any institute is there on the website. And if it's not on their website, they always have like contact person जिनके साथ आप coordinate कर सकते हैं। So I'll give you a quick example. For example, I did my master's from Queen's University in Kingston, Ontario, in Canada. अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, let's pick up a program that is, for example, Global Development Studies. You go on their website, you have every single thing available, every kind of information you need for your study permit and, planning to study in Canada. जो आपके specific questions हैं वो आप, for example, you can see on the screen कि graduate coordinator या contact information मौजूद है। आप इनको email कर सकते हैं, आप इनको call कर सकते हैं to ask for specific queries that you have about the program, because they are there to help you. And one really, really good thing about Canadian institutions is that they respond to your queries. They tell you what you're supposed to do or what you should do in order to address any concern that you have for studying in that specific institute. IELTS में कितने बैंड स्कोर होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और इसके अंदर काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हैं क्या है। तो अगेन गोइंग बैक टू आवर द थिंग दैट आई एम stressing a lot कि अपनी research और go to their website and see requirement जो basic है वो दी हुई होती है हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कि आपको क्या चाहिए। अब एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन लाइक मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर IELTS band score is 5.5 or 6, try to have a score up than that, because होता क्या है, यानी रिक्वायरमेंट तो आपने पूरी कर ली मिनिमम के 5.5 या 6 आपका बैंड आ गया ओवरऑल यानी हर कंपोनेंट में, लेकिन just keep in mind that thousands of students are applying from all over the world to that institute, and then there is a question of competitive advantage. So whoever is in the top pile of those thousands of applications will get priority. This is not something that happens आपके यानी regular basis पे हमें नहीं पता कि admission department में क्या चल रहा है, लेकिन this is something I should keep in mind because it makes sense. Obviously, the students who are more, who score well, who are, more related to the program that they are applying to, their whole application, they will get better chances of getting accepted into quality university. Another question: when to apply in Canadian institutions for studying over here? Canadian institute जो university colleges हैं, there are three terms that you can apply to.
The first one is like the most common one is in September, that is called the fall term or fall semester, जबकि classes start होती हैं. Another term is like winter semester, which starts in January, and then there is a spring semester that maybe like start in April, March, April, things like months like that. There's also a summer semester, but it's not that common. Depending on which program you're going to, it varies. But most commonly, spring semester, fall semester in September, and winter semester in January. Those are the two main and most commonly known timelines to apply here. तो आपको अप्लाई कब करना चाहिए? जिस भी टर्म में ऑब्वियसली आप जाना चाह रहे हैं, अगर आप सितंबर की क्लासेस के लिए आपका प्रोग्राम उसमें स्टार्ट हो रहा है, तो एटलीस्ट स्टार्ट अप्लाइंग 6 months बिफोर, because once you apply for the program they have like different deadlines. Most of the programs that start in September, उनकी deadline होती है January, mid of January, and then after that you have to also apply for study permit. And according to like the recent happenings in the world, like obviously I'm referring to COVID and all the uncertainties that are going on and going around, that is it will take a lot of time to process everything, and you should expect like delays in your application processing. तो जितना जल्दी हो सके आप अगर अपनी application process करें study permit की, उतना ही बेहतर होगा. So an ideal would be if you want to start in September the following year, so you should start preparing your application materials and all the associated documents a year earlier. That is the safest option according to my opinion. Part-time jobs in Canada. Students have been asking कि अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं, आपको study permit मिल जाता है, तो part-time jobs आप करके अपने educational expenses और cost of living and all of those things आप manage कर सकते हैं या नहीं. तो one thing to keep in mind over here is कि जब आप as a student आते हैं तो आपके study permit की एक limitation ये होती है कि आप 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते. और 20 घंटे का मतलब है 20 घंटे, like it's not like you work 21 hours and get away with it. No, 20 hours mean 20 hours, and if you violate that you'll be bearing consequences. आगे बहुत सारी मुश्किलात हो सकती हैं आपके लिए. स्टडी परमिट आपका एक्सटेंड अगर करना चाहें वो ना हो पाए अगर the authorities, they know that okay, you have worked more than 20 hours during your study period. However, if you are on your semester break, winter break आती है 2 weeks की तकरीबन, और फिर समर ब्रेक आती है तकरीबन 2-3 महीने की, उसके अंदर आप फुल टाइम काम कर सकते हैं. बट द कंडीशन इज एज लॉन्ग एज यू आर इन स्कूल फुल टाइम यू कैन नॉट वर्क मोर देन 20 hours. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड. 20 hours का मतलब है आपको मिनिमम वेज पे अगर कोई जॉब मिलती है, तो मिनिमम वेज राइट नाउ हियर इन ओंटारियो स्पेशली इज $15 per hour. तो आप खुद ही एस्टिमेट लगा लें तो यू विल बी मेकिंग समवेयर अराउंड लाइक मोर देन $1,100-1,200 a month. और यहाँ पर आजकल जिस तरह हर जगह ही कॉस्ट ऑफ लिविंग और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी यही हिसाब है कि आपको अगर एक रूम एंड लॉजिंग अगर आपको लेनी है तो आपका एस्टिमेट तकरीबन $600 to $800 पर रूम आपका होगा, एंड दैट इज़ ओनली द प्लेस वेयर यू बी लिविंग. उसके अलावा आपकी यूटिलिटीज़, आपकी ग्रोसरीज, खाना पीना, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं. तो अगर आप $1,100-1,200 पर मंथ अगर आप कमा रहे हैं एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट, तो जस्ट कीप इन माइंड दैट विल ओनली बी योर लिविंग एक्सपेंसेस. आपकी फ़ीस आप उससे नहीं निकाल सकते अनलेस आपकी ऑब्वियसली मिनिमम वेज से ज़्यादा हो, या फिर आप ऑन कैंपस काम कर रहे हैं. क्योंकि ऑन कैंपस काम करने का ये फ़ायदा होता है कि आप यू कैन वर्क मोर देन 20 hours, डिपेंडिंग कि आपके स्टडी परमिट की वो एलिजिबिलिटी हो. So just keep that in mind. It's always a good idea to keep working as long as you're abiding by all the rules and regulations. But at the same time, you have to learn how to manage your money and live within those means. That also means making a lot of sacrifices. But those are all for your own better future. So obviously try to learn कि उस टाइम के दौरान आप अच्छे से मैनेज कर सके अपनी मनी. Another very important question, and it's a very interesting question, is that should we hire a consultant to get admission in college and university in Canada? तो
बैकग्राउंड उसका ये देती चलूँ कि कंसल्टेंट या कोई भी हेल्प अगर आप हायर करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो यू आर लुकिंग फॉर convenience and you're looking and you're hiring them for their experience in applying. They probably have applied for like thousands of students already, तो उनका experience की बेस पे और अपनी convenience के लिए आप किसी को हायर करते हैं ताकि आपको आपका टाइम ज़्यादा ना लगे उसमें और आप ईजिली हर चीज़ हर स्टेप के साथ गुजर जाएं. लेकिन to be honest, if you spend some time like dedicatedly on your applications, on your permit applications and anything of that sort, you can do it on your own. That's a fact. Every information you need for getting admission into an institute is on their website, like specific institute. Every information you need for study permits, it's on CIC, जो Canadian Immigration की website है उसके ऊपर. तो हर चीज़ मौजूद है. आपको जस्ट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है और थोड़ा सा आपको डेडिकेशन के साथ प्लानिंग करनी है कि हाउ टू गेट थिंग्स डन. In order to have any consultant, just make sure that their history is like good. They have had more positive results in the past years. Like आप स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, आप उनकी स्टैट्स देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को वीज़ा मिला या क्या प्रोसेस है, or also about their fees. If someone is charging a lot of money and you don't have that money, so obviously you won't go for it. But if you have it, go for it. Like, it's convenience, it's good, and they have experience in applying for different institutes, so why not? Processing time is a very genuine concern right now. Since the beginning of the pandemic, everything has went like, upside down in terms of processing the application fees. So, for example, there is a SDS category, जिसके अंदर Pakistani students, Indian students और कुछ और countries हैं जो कि जिनके students apply कर सकते हैं through that stream. The minimum time for that stream, for application processing is 20 days. However, there are students who have been waiting for their study permit for like 6-7 months in that category. So don't rely on the timelines. It's also on their website due to a lot of backlog of applications, a lot of people trying to turn their study permits into work permits, and then from work permits to PR. All those applications are taking a lot of time, and they don't have staff to process all of those applications in time. So just be mindful of that thing. Generally, अगर हम कोविड एरा में ना रह रहे होते तो जनरल टाइमलाइन जो है वो आपकी college acceptance की. So for example, if you have applied in September, October for like in next year September intake, तो आपको acceptance तकरीबन universities start sending you acceptance in March and April. College acceptance sometimes they let you know in a month, sometimes they take more time. तो ये टाइमलाइन है. और वीज़ा प्रोसेसिंग अगर आप जनरल कैटेगरी जो जनरल इनका बेसिक स्ट्रीम है अगर उसके थ्रू अप्लाई करें तो it could take around from 12 weeks to 16 weeks. And again, like if you're applying through SDS, that is student direct stream, it will take 20 to 21 days to process. But again, like it's not something that's going to happen right now because there is a lot of backlog and everything is taking more time than usual. So that's it for now. I hope कि जो आपके main question थे, like the frequently asked question that I've been having on Instagram account, have been answered. If not, please feel free to comment below and let me know what else you want to know about. यहाँ पर सिर्फ एक ये चीज़ बताती चलूँ कि I cannot assess or deal with your individual specific situations. I'm not an immigration consultant. I'm just advising you. I'm just giving you my thoughts from my experience, my research, or the students that I've talked with, या फिर information जो कि already websites पे मौजूद है. तो आप just keep in mind that I cannot assess your individual situations. For that, you obviously need someone more experienced in the field. At the same time, if you keep following me here on LinkedIn or on Instagram, I'll be doing more stuff related to study, work, lifestyle in Canada. So please let me know what you want to know, and then I can definitely make some useful content for all of you. So इसके साथ ही thank you so much for watching, and I'll be back when I have more questions to answer. Bye bye.